अस्सलाम वालेकुम। ये चैप्टर 10 के सिलसिले में हमारी दूसरी वीडियो है। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपके साथ इसके कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉर द लिस्टेड कंपनीज आपसे डिस्कस की, राइट। और मैंने उसमें वीडियो में मेंशन किया था कि मैं अब कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉर पब्लिक कंपनी, तो उनका रेगुलेशन का बेसिकली कंपैरिजन, रेगुलेशन की समरी, उसके बाद हमारे चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस, केस और तमाम चीज़ें आपसे मैं सेकेंड वीडियो में डिस्कस कर लूंगा ताकि आपको रिवीजन और पढ़ने में आसानी रहे। ओके। हमने जब आपको क्विक रिवीजन के लिए मैं अगर आपसे बात करूं, जब हमने बात की तो हमने इंट्रोडक्शन कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रेफरेंस में हमने बात की थी। द डेफिनेशन आई हैव डिस्कस्ड, आई विल अगेन रिपीट दैट कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ रूल्स, practices, processes by which a company is directed and controlled। देखिए, जब डायरेक्टेड एंड कंट्रोल की बात करें और हम कहें जी पब्लिक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, तो वहां पर हमारे बहुत सारे इश्यूज गवर्नेंस के आते हैं और हम सुनते रहते हैं कि हमारे पास पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो है वो प्रॉपरली नहीं रन हो रही या वहाँ पे इश्यूज हैं। मैं नेम ऑफ द कंपनी नहीं दूंगा बिकॉज दैट डजंट लुक गुड। लिस्टेड कंपनीज आर रन मोर प्रोफेशनली, ये हमारा कॉन्सेप्ट है हमारा। It defines the framework for achieving the balance between the interests of a company's stakeholders, including the shareholders, management, consumers, customers, suppliers, financiaries, government, and the community। देखिए, गवर्नमेंट यहाँ पे मेन प्लेयर है जहाँ पे हमें देखना होगा। ओके, हमारे पास एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जहाँ पर आज हम ये कह रहे हैं कि स्टेट ओन एंटरप्राइजेस जो मौजूद हैं, दे शुड बी प्राइवेटाइज्ड। उसके ऊपर सारी हम बात कर रहे हैं। तो जाहिर है फिर वहां पे बहुत सारे सवाल उठते हैं, हाउ दोज ऑर्गेनाइजेशंस आर रन एंड वर बीइंग रन। तो अब उसको देखने के लिए बेसिकली मैं आपके साथ जो है इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे मैं। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पर। इसमें भी देखिए, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा, अपॉइंटमेंट होंगी, नॉमिनेशन होंगे, प्रोसीजर्स होंगे, ऑडिट होगा। और जब पब्लिक सेक्टर कंपनी हम कहते हैं, तो पब्लिक सेक्टर कंपनी से हमारा ये मकसद नहीं है कि हम बिल्कुल ही कहें कि गवर्नमेंट। इसके अंदर बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं अब जो स्टॉक एक्सचेंज पे हमारे से मौजूद है, लेकिन क्योंकि वो लिस्टेड है तो हम वहाँ पर लिस्टेड की रेगुलेशन फॉलो कर लेते हैं। देखिए, कंपेरेटिव टेबल मैंने बना यहाँ कर दिया है फॉर द सेक ऑफ द कन्वीनियंस भी है और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी है कि 2000 हमारे जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसमें वो क्या कहते हैं, एप्लीकेबिलिटी है। लिस्टेड कंपनी डेफिनेटली इट अप्लाइज टू लिस्टेड कंपनीज विद with a comply and explain approach, applies to the public sector company with the rules and for the compliance based on the statutory regulations। उसके हिसाब से बोर्ड कंपोजिशन में देखिए, 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और मिनिमम ऑफ द टू विच एवर इज हायर, मैंडेटरी inclusion of the one female director। 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नो स्पेसिफिक मैंडेट फॉर द फीमेल डायरेक्टर। फीमेल डायरेक्टर का हम पब्लिक सेक्टर कंपनी में कोई खास बात अब नहीं कर रहे, मैंडेट नहीं है हमारे पास। नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप जो है यहाँ पर 7 है हमारे पास। देखिए, मैक्सिमम हम कह रहे हैं जी 7 हो सकती है, जबकि पब्लिक लिस्टेड कंपनीज के पब्लिक कंपनीज के अंदर हम कह रहे हैं ये 5 है हमारे पास। ओके, सीईओ, चेयरमैन एंड द सीईओ रोल मस्ट बी सेपरेट। चेयरमैन सीईओ मस्ट बी सेपरेट, चेयरमैन मे बी अपॉइंटेड। यहाँ पे देखिए अब चेंज क्या है, चेयरमैन, इसको अगर मैं हाईलाइट कर दूं आपकी कन्वीनियंस के लिए, तो हमने कहा चेयरमैन जो होगा वो अपॉइंट होंगे बाय द गवर्नमेंट। बोर्ड कमिटीज, बोर्ड के अंदर मैंडेटरी ऑडिट कमेटी, एचआर कमेटी, रेम्यूनरेशन कमेटी, नॉमिनेशन, रिस्क मैनेजमेंट कमिटीज। मैंडेटरी ऑडिट कमेटी है, अदर्स आर ऑप्शनल। अदर्स आर ऑप्शनल, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, डिफरेंस हो गया हमारा। देन वी हैव द ट्रेनिंग ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स ट्रेनिंग बाय द सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन था। ओरिएंटेशन एंड इनकरेज सर्टिफिकेशन, एनुअल ओरिएंटेशन कोर्सेज रिक्वायर्ड। और एनुअल है और इंकरेज का वर्ड है, मैंडेटरी नहीं है। ओके, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंडोर्स्ड बाय सीएफओ और सीईओ। क्वार्टरली, मंथली, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द लिस्टेड कंपनीज रिक्वायरिंग हाफ ईयरली रिपोर्ट। अगर है तो फिर हाफ ईयरली पे हम चले आते हैं। ठीक है, लेकिन लिस्टेड है तो डेफिनेटली वो क्वार्टरली तो उनके साथ आ ही जाएगा। इंटरनल ऑडिट, mandatory internal audit function reporting to the audit committee, mandatory internal audit with reports submitted to the audit committee, more or less same हो गया ये। external auditor, rotation of the auditor for every 5 years for the financial sector and engagement partner for others। no specific rotation but the compliance with the professional standard is required। इसका मतलब जो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है वही चीज यहाँ फॉलो की जाएगी, लेकिन मेंशन नहीं है कुछ। related party transaction,
reviewed by the audit committee and approved by the board. Review by the audit committee, approved by the board, the non-arm length transaction highlighted separately. तो ये अब होगा और नॉन आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन होंगे वो हाईलाइट कर दिए जाएंगे सेपरेट. ये हमारे पास कंपैरेटिव टेबल हो गया कि दोनों रेगुलेशंस में क्या चेंज है. अब जब मैं रेगुलेशन की समरी आपके साथ डिस्कस करूंगा, प्लीज कीप इट माइंड, ये पॉइंट हमारे पास वहां पर आएंगे. The Corporate Governance Rules 2013 set for the regulation of the public sector companies. Key definition: executive, non-executive और independent directors हमने लाया. Board of directors में at least 1/3 independent directors हैं हमारे पास, ये हमारा वहाँ पे ही मौजूद था. Fit for the, ये एक वर्ड है, fit for the proper criteria, इसको मैं डेप्थ से बात करूंगा आखिर. Chairman and the CEO role must be separate. Okay. Board is responsible for setting corporate strategy and vision. Public sector companies must comply with international financial reporting standards. तो IFRS उनके ऊपर अप्लाई हो गया. Annual reports must include the compliance statement and disclosures. Audit committee must oversee financial reporting compliances. Rules ensuring transparency, related party transaction and procurements. यहाँ पर बहुत सारे गवर्नमेंट के अपने पेपर और रूल्स और मुख्तलिफ चीजें भी आ जाती हैं. Directors' remuneration must be disclosed in the annual report. Public sector companies must have whistleblowing mechanism. Board members must participate in a training. Non-compliance with the rules and results penalties under the Companies Act. Okay? ये तो हमारे पॉइंट हो गए जो मोरलेस सेम है लेकिन थोड़े डिफरेंट थे, जो मैंने ऊपर आपके साथ कंपैरेटिव टेबल में डिस्कस कर लिए थे. अब इनको थोड़ा डिटेल में मजीद देख लेते हैं. इनको देखिए, डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड फॉर 3 years. इंडिपेंडेंट 1/3 इंडिपेंडेंट हो गए हमारे पास. फिर हमारे पास ऊपर सॉरी मिस हो गया कुछ में से. जी हाँ, the corporate governance regulation 2013 regulates public sector companies. These rules define the key designations की हमने बात कर ली. Comply with the board requirement. 1/3 independent directors होंगे बोर्ड के ऊपर हमारे. Then not डायरेक्टरशिप 5 से ज्यादा नहीं हो सकती. ये मैंने आपको हमेशा कह दिया. 3 साल का इनका टर्म पीरियड है डायरेक्टर्स का, जो कंपनी लॉ भी डिफाइन करता है. राइट. अब देखिए, फिट फॉर द के बाद जब हम बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, integrity and reputation, legal compliance and ethics, independent and conflict interest, independence and the conflict of interest जो है इसको हम देखेंगे. Disqualification from holding office as a director and continuous evaluation. Directors must declare any conflict of interest or abstain from the related decisions. ये वैसे भी कंपनी लॉ ने कहा हुआ है कि जहां किसी भी ट्रांजेक्शन के अंदर डायरेक्टर का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, डायरेक्टर शुड एब्सटेन फ्रॉम देयर. द रोल ऑफ द चेयरमैन एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव मस्ट बी सेपरेट. इसको सेपरेट होना है. द बोर्ड इज मैंडेटेड टू एस्टैब्लिश अ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी एंड द विजन. Internal control systems, including internal audit function and the compliance mechanism, must be implemented at all levels. Public sector companies must adhere IFRS for the financial transparency. Annual reports should prepare clear statements of the compliances with the corporate governance. Establishment of an independent audit committee, essential to oversee financial matters. Related party transactions and the procurement processes must be conducted with the transparency and fairness. Board oversight देखिए, board oversights the audit committee review. The approval mechanism, board must approve the pricing method. अब इसे देखिए, ओवरसाइज कर रहा है ऑडिट कमेटी को, प्राइसिंग मेथड से अगर कोई ट्रांजेक्शन में है रिलेटेड पार्टी के, उसको अप्रूव करेगा. द रिकॉर्ड कीपिंग एंड द रिपोर्टिंग ट्रांजेक्शन मस्ट बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. रेस्ट्रिक्शंस and the fair pricing, directors cannot participate in the decisions in which they are involved. In the decisions or the voting of the transactions involving their interest. General mandate for the recurring transaction. एक general mandate भी हो सकता है. Directors' remuneration policy should be disclosed to ensure accountability and prevent conflict of interest. Whistleblowing policy mechanism must be there. Board members must undergo periodic training. Failure
to comply with, definitely the company law is there. These are the things that we are talking of. इसमें देखिए मैं एक दफा गो थ्रू कर लेता हूँ बिफोर वी रीच टू द एंड. कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा. साउंड प्रूडेंट मैनेजमेंट है, कॉमन पॉइंट है. देखिए कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ये आपसे डिस्कस कर चुका. टर्म ऑफ ऑफिस में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ. रोल ऑफ द चेयरमैन सेपरेट होगा हमारा, ये हम बात कर चुके. रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द पावर ऑफ द बोर्ड. मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड ईच क्वार्टर, क्योंकि क्वार्टरली अकाउंट्स हमारे पास होने हैं. बोर्ड हैज टू मीट ईच क्वार्टर फॉर द अकाउंट्स. ये बोर्ड की जो फंक्शंस हैं इनको देख लीजिएगा एक नजर. परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होगा. रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन अभी मैं आपसे ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ, और मजीद ये डिटेल थोड़ी और मौजूद है, इसको भी एक नजर पढ़ लीजिए. फॉर्मेशन ऑफ द बोर्ड कमिटीज है, ये मैं आपसे लिस्टेड कंपनी में भी डिटेल में बात कर चुका हूँ इस टॉपिक पे. रेम्यूनरेशन, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, ऑडिट कमिटी अगेन. इसी देखिए अगर आप ऊपर का टॉपिक, जो फर्स्ट टॉपिक हमारा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉर द लिस्टेड कंपनीज, आप डिटेल में एक दफा कर लें तो ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है. बहुत थोड़े से चेंजेस हैं जो कंपैरेटिव टेबल भी आपको प्रोवाइड कर रहा है, जहां से आपको हेल्प मिल जाएगी उन चीजों को देखने के लिए. और एक दफा इस डॉक्यूमेंट को जरूर पढ़ ले, मैं सजेस्ट करूंगा. देन वी हैव द क्वेश्चंस, व्हाट शुड बी द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड फॉर अ लिस्टेड कंपनी, ऑफ ए लिस्टेड कंपनी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. ओके, तो ये हमारी कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड की बात हो गई. Narrate the relevant provisions of the Code of Corporate Governance regarding remuneration of directors, or we narrate the qualification of the chief executive, chief financial officer under the Code of Corporate Governance, that is a chartered accountant, a cost management accountant with 3 years experience, any other member of the any other institute, or the degree that is approved by the HEC Higher Education Commission, then that is 5 years, and any qualification from the foreign institute, then it requires a minimum period of 7 years. यही देखिए इंटरनल ऑडिट के लिए भी है. देखिए जब याद कर रहे हैं तो ख्याल रखिए, बहुत दफा कम एफर्ट में ज्यादा काम हो जाते हैं, तो इस बात का ख्याल रखिए कि वहां पर हम इंटरनल ऑडिट वाला काम भी अपना कर लें. ओके, कंपनी सेक्रेटरी इंटरनल ऑडिट तमाम चीजें आती है. देखिए एटलीस्ट 7 days प्रायर टू द, अपना क्या था हमारा, रिटन नोटिसेज एंड द रेलेवेंट मटेरियल टू द बोर्ड के लिए कब भेजेंगे हम, 7 दिन पहले भेजेंगे. मैक्सिमम नंबर ऑफ द डायरेक्टरशिप ऑफ द पर्सन इन लिस्टेड कंपनी 7. देखिए ये भी 7 था, ये भी 7 हो गया. राइट, चीफ एग्जीक्यूटिव एंड द चेयरमैन ऑफ ए लिस्टेड कंपनी शुड बी a single, no cannot be, maybe no, should not be a single individual. देखिए अब सेपरेट पर्सन और सिंगल इंडिविजुअल, देखिए सी आई है. राइट, अब देखें आंसर को, देखिए आगे नीचे कहाँ थे हम, ये हम थे क्वेश्चन नंबर 3 पे. अब 3 पे देखिए सी. ओके, तो बाकी हमारे तमाम चीजें आ रही. पब्लिक सेक्टर कंपनीज कॉर्पोरेट गवर्नेंस 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड फॉर द रीजन ऑफ रिमूवल ऑफ द नॉमिनेटेड डायरेक्टर. ठीक है, तो ये नॉमिनेटेड डायरेक्टर के लिए देख लीजिए ये रेगुलेशन को. ये हम सी की बात कर रहा है. सी इज द होल्डिंग ऑफिसर मोर देन 2 consecutive टर्म्स. तो 2 टर्म से ज्यादा वो नहीं होल्ड कर सकते, इनको फिर हटना पड़ेगा. ठीक है जी, इसको देख लीजिए. इसके बाद व्हाट वी हैव हियर शॉर्ट क्वेश्चंस फॉर द क्विक रिवीजन. राइट, डायरेक्टरशिप कितनी है हमारी, 7 है, जो हमारे एमसीक्यू में भी आ गई थी. व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, 2/3, एटलीस्ट 2 और 1/3. Okay, it is mandatory for a listed company to have the female director. Yes, it is at least 1. Can the chairman and the CEO same person? No, cannot be. Should be separate person. Same individual नहीं हो सकते. What is the role of the audit committee? Audit committee reviews the financial statements, internal control, and the risk management. Key role.
क्वालिफिकेशंस फॉर द रिक्वायर्ड ऑफ द सीएफओ, सीएफओ की क्वालिफिकेशन अभी ऊपर मैं आपसे बात कर रहा था, एट लीस्ट 3 years इन केस ऑफ द मेंबर ऑफ द आईसीएमएपी और आईकैट. Comply, what is the compliant or explain approach? Companies can either comply with the non-mandatory provision or provide an explanation for the non-compliance in their compliance report. कि बात चीजों में वो comply क्यों नहीं कर रहे, फिर उसकी रीजनों को बता दें. What is the role of the internal audit function? The role of the internal audit function is to ensure effective internal control and report to the audit committee and the CEO. How often should the audit committee meet? Quarterly, once in every quarter. देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कब मिलेंगे? क्वार्टरली. ऑडिट कमेटी भी क्वार्टरली मिलेगी. तो हम बातों को लिंक कर लें अपनी. What is the penalty for the non-compliance? Right? The penalties as mentioned in section 512 of the Companies Act के तहत ये बात हो जाएगी. ठीक है. Comprehensive questions हमारे. What are the key responsibilities of the board of directors under the code of corporate governance? Board is responsible to adopt corporate governance practices, monitoring their effectiveness, ensure high ethical standards. It must establish risk management policies, review business risk annually, and ensure that the sound internal control. The board must also prepare a vision or mission statement, adopt the code of conduct, and ensure a system of the grievance redressal. ठीक है. इसके अंदर देखिए, हमने ग्रीवियस रिड्रेसल की भी बात की थी, जिसको मैंने आपसे कहा था कि इसके अंदर हमारे पास जिसको हम कहते हैं, एक तो सॉरी वर्ड आई एम जस्ट मिसिंग फ्रॉम हियर, जो जॉब के ऊपर हमारे कोई थ्रेट नहीं होना चाहिए, दैट वी आर टॉकिंग ऑफ, कि हम लोग फ्रीली काम करें और वहां पर हमारे पास जो है कोई ऐसा रिस्क नहीं होना चाहिए. ओके, I'm sorry, just the word slipped from mine. Okay, I'll let you know. Okay, explain the composition and the role of the audit committee in a listed company. Right? The audit committee must have at least 3 members, including 1 independent director. If it reviews the financial statements, internal control, risk management, the committee also facilitates external audit. Right? External audit reviews the management letter and ensures coordination between internal and external auditor. Okay? जॉब हैरेसमेंट, सॉरी, जो वर्ड में स्लिप हो गया, मैं भी आपसे कहता था ऊपर के पॉइंट पे, वो जॉब हैरेसमेंट को हमारे पास नहीं होना चाहिए. It should not be there. What are the qualification required for the CFO? हम CFO के लिए बात कर चुके. ठीक है, तो ये हमारे MCQ में भी आ गया था. What are the key provisions regarding the remuneration of the directors? The director must have the formal policy regarding determining the remuneration of the director. The director cannot determine their own remuneration, and the level should be appropriate to attract or retain the talent without compromising the independence. Okay. What are the requirements of the for the external auditor under the Code of Corporate Governance? External auditor must be registered with the Audit Oversight Board and comply with international ethical guidelines. They must rotate every 5 years in the financial sector, and the engagement partner must rotate in other sectors. Auditor must also provide a management letter to the board within the 45 days अंदर प्रोवाइड करना है. ओके, ये देख लीजिए, ये तमाम चीजें एक्सटर्नल ऑडिट के लिए बड़ा अच्छे तौर पे समराइज हो गई हैं. यहाँ पे मैं इसलिए इसको हाईलाइट भी करता हूँ. केस स्टडी. ABC Limited, a listed company, is facing issues with its board's composition and internal control. The company has 1 independent director, and the chairman also serves as CEO. The internal audit function is outsourced to the firm associated with the external auditor. The company has not disclosed its risk policy on the website. अब देखिए कितने यहाँ पे अगर हम आइडेंटिफाई करें जो चीजें हमारी नॉन कंप्लायंसेस की तरफ जा रही हैं. बोर्ड की कंपोजिशन में हमारे पास 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, जहाँ पे कम से कम जो मैंने बात की 2 या 1/3 होना चाहिए. पहला नॉन कंप्लायंस आ गया. Chairman, the CEO, same person. Those are non-compliance. Internal audit function outsourced to the firm that is associated with the external auditor. Third, non-compliance. The company has not disclosed risk management policy on the website. Fourth, non-compliance. अब देखिए 4 चीजें हमारे पास आ गई इस केस में. The board composition, board has only 1 independent director, which below the required limit of 2 or 1/3. Chairman and the CEO are the same person, which is against the regulation. Internal audit
function is outsourced to the firm with associated to the external auditor, which is conflict of interest. The independence doubtful हो गई. Disclosure of the company has not disclosed its management policy on its website, which is a violation of the disclosure requirement. Composition: the board should appoint at least one more independent director. How to heal up the things? जब इसको कैसे हम पूरा करें? हम एक और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर लें ताकि हमारे पास चीजें सही हो जाए. इंटरनल चेयरमैन सीईओ सेपरेट करने हैं वो अपने बोर्ड कंपनी के लिए. देन इंटरनल ऑडिट जो है वो जो आउटसोर्स हमने किया हुआ है एसोसिएट और एक्सटर्नल ऑडिटर को वो हटा दें ताकि वहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट खत्म हो जाए हमारा. और हम अपने वेबसाइट के ऊपर रिस्क पॉलिसी को डिस्क्लोज कर दें. तो दीज आर द थिंग्स. ये हमारे पास देखिए आपके कई क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाते हैं. ओके, तो ये केस स्टडी मौजूद है. आई विल गो बैक टू योर मेन टॉप जहाँ से हमने डिस्कशन शुरू किया था. देखिए लिस्टेड कंपनीज के अंदर मैंने आपके साथ ये तमाम डिस्कशन कर ली है, राइट. और ये समरी के थ्रू मैंने बात कर ली थी आपके साथ. तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो में कवर हो गया. सेकंड वीडियो में मैंने आपके साथ पब्लिक कंपनी को कवर किया. उसके साथ मैंने आपके साथ जो है डिस्कशन के अंदर उसका कंपैरिजन किया. इफ आई टेक यू वेरी क्विकली ऑन द कंपैरिजन, यस हियर इट इज. ये देखिए ये कंपैरिजन आपके साथ मैंने किया एप्लीकेबिलिटी के लिए, बोर्ड कंपोजिशन के लिए, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप के लिए, सेपरेट रोल, बोर्ड कमिटीज, ट्रेनिंग प्रोग्राम, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट एंड द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन. ये तमाम हमने यहाँ कवर किए. इसके बाद मैंने आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज एंड डिटेल क्वेश्चंस के अंदर तमाम चीजें और कवर कर ली. तो मतलब व्हाट आई हैव ट्राइड इन माय 2 वीडियोस टू कवर द टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली, सो दैट आप अगर कोई एक दफा तसल्ली से देख लें तो आपका पूरा जो एग्जामिनेशन प्रिपरेशन है वो आपकी हो जाए. इंशाल्लाह ताला इट विल हेल्प यू आउट. मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करूंगा इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज.